Hello students, I hope you all are fine. Students, today we will discuss about the type of the chemical reactions in organic chemistry. I already discussed about them. There are 8 type of the reactions. So one by one we will discuss about them. Today we will discuss only substitution reaction. Okay, substitution reaction. What do you mean by the substitution reaction? Substitution reactions are those in which one element, the reaction in which one element, or we can say one substance is replaced by others, that is known as the substitution reactions. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है? जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस कर देता है, so that type of reaction is known as the substitution reaction. Students, here in organic chemistry we will discuss there are 2 type of the substitution reactions. One is the nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reactions and electrophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions and electrophilic substitution reactions. So 2 टाइप से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. Then students, nucleophilic substitution reactions further divided into 2 with respect to their mechanism, SN2 and SN1. Here we will not discuss about SN2 and SN1, but we will discuss only nucleophilic substitution reactions and electrophilic substitution reactions. So students, what do you mean by the electrophilic substitution reactions? Electrophilic substitution reaction. Students, नाम से ही हमें पता है electrophilic means electrophile, substitution means the reaction in which replacement of electrophile take place, in which substitution of electrophile take place. That type of reaction is known as the electrophilic substitution reaction. Okay, so students, electrophilic substitution reactions वो reactions होती हैं जिनमें substitution या फिर replacement किसका होता है? electrophile का. For that we should know about electrophile, and we already discussed electrophiles mean electron loving species. Electron loving species who will affect with the electron. इलेक्ट्रॉन के साथ अफेक्शन कौन रखेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. सो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं. समटाइम दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज and sometime they may be neutral also. Overall we can say if electron deficiency taking place in any element, in any ion, in any molecule, then it is known as the electrophile. And electrophilic substitution reaction, when one electrophile substitute other, okay, then it is known as the electrophilic substitution reaction. For example, students, if we have benzene ring and here we are having Cl, chlorobenzene we are having, okay,
And students, if we want to react it with any halogen, here I am reacting with chlorine. Okay, so halogenation we are doing here, and because we are taking chlorine, so we can say chlorination. This chlorination we will do in presence of anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3, or FeCl2 we can also take. FeCl2 also we can take. Okay, then student, what will happen? What will happen, you know very well. In case of benzene, there are 6 carbons, there are six carbons at each corner, and alternate position double bonds are there. So students, at each carbon hydrogen also present. All know, because formula of benzene is C6H6. Formula of benzene is C6H6, means 6 carbons and 6 hydrogens are there. Okay, then students, what will happen? You can see one chlorine present here, and the hydrogen which is present at this carbon, it is replaced by one electrophile. It is replaced by one chlorine, or it can be replaced by this one hydrogen. Either it can replaced by this one hydrogen, or it can replaced by this one hydrogen. So students, यहाँ पर हमने किया क्या है कि इस हाइड्रोजन को नहीं, H पॉजिटिव को रिप्लेस किया है किससे? Cl पॉजिटिव से, मीन्स एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से हमने रिप्लेस किया है. ओके, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू से इट इज इलेक्ट्रोफाइल? व्हाट विल हैपन? सी मैकेनिज्म ऑफ this. We are having chlorobenzene. We are having chlorobenzene. In chlorobenzene, chlorine has 3 lone pairs of electron. Then students, conjugation means they can show resonance. One pair can shift here and this one can shift here. Already we have discussed about resonance. Okay, then what will happen here? One pair of electrons shifted here, so double bond. दो यहाँ है, it is losing, so positive charge. This pair of electron, this bond shifted here, so one bond has 2 electron. It is gaining, so negative charge. Okay, सो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्लोरीन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे. अगर ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड अब 5 हैं. तो बट जो क्लोरीन है वो क्या है, हमारी टेट्रा कोवेलेंट है, केवल 4 ही बॉन्ड मैक्सिमम वो बना पाएगी. सो जो ये हमारा जो डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा. ओके, आगे शिफ्ट होगा तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, और क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, दैट्स व्हाई we are putting negative here. Okay, then students, further shifting we can do. You know very well how to draw structures. These are the resonating structures. Okay, ऐसे आगे से आगे हम delocalization show करेंगे. Okay, then we are not making any type of change here.
So write as it is. Write as it is. Here, this one pair of electron you are shifted here. Now it is double, and this bond you are shifted at this carbon. It is having 2 electron, but because it is gaining, so negative charge. And here as it is. Okay. So further you will show shifting this pair here and this here. This shifted here, these 2 electrons shift here. Okay, and then students, this pair shift here, and further this one shifted at chlorine. Now this one double bond, and further electron goes on this. So students, ये हमारे resonating structures हैं. Resonance का topic हमने पढ़ा भी है. So you know very well how to draw structures. Okay, हमने करना क्या है, just delocalization, just electron की shifting करनी है आगे से आगे. Okay, तो यहाँ पर क्लोरीन के पास हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये शिफ्ट होंगे, तो यहाँ कार्बन के साथ 5 बॉन्ड होंगे, बट कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकती है. तो जो ये बॉन्ड है हमारा, ये नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट होगा. ओके, जिसकी वजह से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज. सो सेकंड में ये जो हमारा जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और जो ये डबल बॉन्ड है ये हमारा यहाँ शिफ्ट होगा. सो इस वजह से आप शिफ्टिंग करोगे. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी here electrons in resonating structures are coming at this position, or at this position also only. So इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो या तो इस कार्बन पर है, या इस कार्बन पर, या फिर इस कार्बन पर. सो इसके रिस्पेक्ट में जो हमने क्या लिया था, क्लोरोबेंजीन. सो स्टूडेंट्स, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन है, तो 1 2 पोजीशन, एंड ये जो पोजीशन है 1 2 3 4 1 4 पोजीशन. ओके, और अगर हम ये भी हमारी क्या है, 1 2 पोजीशन. ओके, 1 2 पोजीशन क्या है, ऑर्थो. 1 2 पोजीशन इज द ऑर्थो पोजीशन. ओके, एंड स्टूडेंट्स 1 4 पोजीशन इज पैरा पोजीशन. 1 4 पोजीशन इज पैरा पोजीशन. ओके, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि होगा क्या, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई. इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिले, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ कहाँ है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर है, या फिर किस पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपने रिएक्शन किससे करवाई थी, क्लोरीन से. Cl2 को मैं कैसे लिख पाऊंगी, Cl. ओके, अब यहाँ ये रिएक्शन आपने किसकी प्रेजेंस में करवाई है, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में. AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम जो क्लोराइड है, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक लुईस एसिड है. इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसके पास. It has deficiency of electron. Okay, you know very well aluminium has 13 electrons. It has 3 electron in outermost shell, and so it has tendency to form maximum 3 bonds, and already it is forming 3 bonds, 1 2 3, and after bond formation only 2 4 6 electrons. Its octet is not completed. Aluminium का octet अभी तक complete नहीं है. Okay, Cl3, sorry, we are taking Cl3 here. So यहाँ पर aluminium का octet complete नहीं है. That's why it needs some more electron. Okay, students, हमने reaction
एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाई, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एल्यूमिनियम के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट करना, इसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। देन स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेयर इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम वेयर इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यू विल सी। सो स्टूडेंट्स, this aluminum chloride, because its octet is not here, aluminum octet is not completed, it needs some electron. So students, it can break this bond, it will try to break this bond, and finally we will get AlCl 4 negative plus Cl plus। क्लियर और नॉट? यहां से एल्यूमिनियम क्लोराइड इस क्लोरीन के बीच का, वैसे तो हमारी क्लोरीन क्या है, यहाँ पर दोनों ही क्लोरीन है, तो होमोलिटिक फिजन होना चाहिए, बट क्यों ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हम यहाँ हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे, जिससे क्लोरोनियम आयन की प्रोडक्शन होगी। और जो, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है Cl+, ये Cl+ रिप्लेस करेगा, ये Cl+ रिप्लेस करेगा किसको? जो ऑर्थो, क्योंकि Cl+ कहाँ अटैच होगा? जहां पर इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे? जहां अवेलेबिलिटी होगी। अवेलेबिलिटी कहाँ है? आइदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, देन व्हाट विल हैपन? आइदर एट ऑर्थो, we are having chlorobenzene doing reaction with chlorine in presence of anhydrous AlCl3. Anhydrous aluminum chloride help to break this chlorine to chlorine bond. It will help, okay, for heterolytic cleavage of this one, and production of electrophile take place here. Then students, this electrophile Cl+, either it can attach at ortho position, or it can attach at para position. With respect to this one, at para position. Okay, why it is attaching at ortho and para only? Because Cl+, attachment of Cl+ take place. Okay, and Cl+ is an electrophile. It is electron deficient species. It need electrons, and from where it can gain electron? Where electrons are available, and electrons are available at ortho and para position only, not at meta position. At meta position, availability of electron not there. Okay, so students, attachment of the chloronium ion take place at ortho and para position, and we will get the ortho para directing substance. And you know very well students, at ortho and para position already already hydrogens are present here. So here H positive, the H positive replaced by Cl positive. So one electrophile is replaced by other. That's why it is known as the electrophilic substitution reaction. Okay, so students, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा। ओके, यहाँ पर जो हमारे ये जो H+ हैं, इनको रिप्लेस किसने किया है? Cl+ ने। इनको रिप्लेस किसने किया है? Cl+ ने। तो यहाँ पर एक
एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस किया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, एंड व्हाई अटैचमेंट टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन? बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is only at ortho and para position. That's why we will get only ortho para directing compound, ortho para directing products we can say. Okay, so students, and here in between them, this one will be the major product. This one will be the major product. Why it is major product? Because here symmetry take place, symmetry, and already they are existing at the maximum distance, so further repulsion cannot take place here. Here minimum possibility of the further repulsion. That's why it is the major product, and ortho it is the minor product. Okay, so in this one electrophile replace other electrophile. Okay, and it is known as the electrophilic substitution reaction. Next one is the nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अभी तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मींस जहां एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है. ओके, द रिएक्शंस इन विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ substitution of one nucleophile take place from other, that type of substitution is known as the nucleophilic substitution reaction. Okay, like students, if we have chloromethane and if we have potassium hydroxide, then what will happen? We will get methanol plus potassium chloride. Students, here what is happening? You can see here we are having CH3Cl. Here students, from KOH, first of all we will identify nucleophile. It can decompose into K plus OH negative, and OH is strong. It is the strong nucleophile as compared to this one. Then students, what will happen? This nucleophile can replace this one. Backside attack will take place here. Okay, if backside attack will take place, then students, it will start to leave. OH, they start to leave. HH. One transition state form in between. One transition state. ट्रांजिशन स्टेट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट. स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट्स में हमने पढ़ा कि इंटरमीडिएट्स में हमारे कार्बोकटायन होते हैं, कार्बो अनायंस होते हैं, ओके, और फ्री रेडिकल्स होते हैं, और एक इंटरमीडिएट एक ट्रांजिशन स्टेट भी होती है. एक ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे इंटरमीडिएट का काम करती है. तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्योंकि जो OH है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू दिस वन, तो बैक साइड से ये जैसे ही अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है, 4 बॉन्ड. कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स. ओके, सो स्टूडेंट, जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक करना स्टार्ट करेगा. बट अभी तक जस्ट इसने बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया है और इसने बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट किया है. तो यहाँ पर एक बीच की स्टेट आती है, दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट. एंड फाइनली क्या होगा, इट विल कंप्लीटली
left. Okay, it will completely break and formation of this take place completely, and finally student we will get our desirable product OH H in this way and plus Cl negative. ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया है, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया. ओके वेयर replacement of nucleophile take place, where replacement of nucleophile take place, that type of reaction is known as the nucleophilic substitution reactions. Okay, so today we discussed about the substitution reactions. Substitution reaction is that reaction in which one substance replaces other. There are two types of the substitution reactions: nucleophilic substitution reaction and electrophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions in which one nucleophile substitute others. Okay, there are two types of nucleophilic substitution reactions, SN1 and SN2. Here we will not discuss about the, in +1 class we need not to discuss about SN2 and SN1 students. Okay, so nucleophile means in which one nucleophile substitute other, then it is known as nucleophilic substitution reaction, and the reaction is in which one electrophile replace other, then it is known as the electrophilic substitution reactions. So I hope it is clear to you what is the substitution reaction. So thank you, have a nice day.